Hey guys, welcome back to my YouTube channel Revs and Smiles. So today what we are going to do is that we are going to unbox this BlueArmor HS1 Bluetooth headphone for my helmet. Hey guys, welcome back to my YouTube channel Revs and Smiles. So today what we are going to do is that we are going to unbox this BlueArmor HS1 Bluetooth headphone for my helmet. Okay, I will give a total review after I use it for 1 to 2 months. Today is the video of unboxing and I will give you initial usage experience. Maybe it has 20 hours of battery life and it's Bluetooth 5.3, app control, USB-C charging, voice assistant, OTA updates. Wow, that's amazing. It costed me around its MRP is 3000, but I got it 100 rupees of discount from my local shop nearby. This product which I have bought is of April 2024. This is a new one. It's made in India product. जो लोग भी फ़ोन ज़्यादा बात करते हैं और आपको ट्रैवलिंग के टाइम पर आपको ना डिस्टर्ब होता नहीं, हम इस तरह के ब्लूटूथ डिवाइसेस का इस्तेमाल करके अपने जो हेलमेट में ये ब्लूटूथ डिवाइसेस इंस्टॉल करके ब्लूटूथ के ज़रिए हमारा फ़ोन कनेक्ट करके हम आगे कॉल्स अटेंड कर सकते हैं. म्यूज़िक आई डोंट रिकमेंड लिसनिंग टू म्यूज़िक व्हाइल यू आर राइडिंग, सो म्यूज़िक भी सुन सकते हैं और साथ ही साथ कॉल्स भी अटेंड कर सकते हैं. हैंड फ्री कॉलिंग हो जाएगा. But if you use your regular headphones, it would like बहुत चुभता है कान में. For that, the only reason I have purchased this thing. Also use a Bluetooth headphone similar to this product, but उसमें क्या है कि it is micro USB charging. मेरा क्या problem था तो I use an iPhone, I use a GoPro and I use my previous generation of Bluetooth headphone. अगर उसका फोटो मिला तो मैं यहाँ इसमें ऐड करता हूँ. तो क्या होता था कि Lightning for my iPhone, Type-C for my GoPro charging and the micro USB or B type pin, I don't know what you call it. So वो चीज़ आपको मेरे helmet कैसे है. I have to carry 3 cables for charging my devices. So what I'm trying to do is that switching to Type-C, I have to carry just one cable. Type-C, Type-C, Type-C. Problem solved. I love Type-C, man. To be honest, I love Type-C. So I've got this product. So let me start the unboxing. And I will show you the मैं खुद नहीं जानता कि मैं आपको इसमें कैसा रंगा. मैं उन्हें ओपन करको मैं चेक करको दे तुम बोले उन्होंने जो ओनर ही शॉप के. तो मैं क्या बोले, नो आई हैव टू मेक ए वीडियो ऑन यूट्यूब, सो आई जस्ट नीड ए सील्ड पैक. सो इट्स कम्प्लीटली सील्ड. ओके, आई जस्ट नीड ए सील्ड पैक. एंड फर्स्ट मैं इसका इनिशियल वीडियोज उठाको, उसके बाद देन आई विल गो फॉर अनबॉक्सिंग. This is the first time I'm going to unbox a BlueArmor's product. I haven't used any BlueArmor's product. So let's unbox. I have this pocket knife. So let's unbox this product. Okay. So this paper punny comes off. Okay. So this is the product. Wow, look at this, guys. This is the battery pack and this is the control or controller. Okay, let's remove it. Wow, 5 volts 1 ampere Bluetooth 5.3, made in India, HS1. Wow, look at this, it's shiny. Okay, what else we can? We get the 2 speakers with the 3M tape on the back and a Type-C cable from BlueArmor and we get some Velcro. And this is our user manual. Turn on and test it. Okay, pairing with mobile phone. What's on the back? Nothing's on the back. And what does it say?
we would like to hear it from you. Okay, quick start guide. So this is the guide. If you want to read, you can pause the video. Now what we are going to do is that we are going to test the connection. Let me long press this guy. Yeah, here it is. Okay, it says connected. So let me play something. I might get a copyright for that. No problem. So it's working fine. So what I want to do now is that I want to set up in my XR helmet. So let me show you my helmet. So guys, as you can see, this is the helmet which I'm talking about. It's an XR helmet. It's an XR helmet. You might have seen this in my first short video और करेंगे, बट मैं आपको ये हेलमेट कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ. सो इट्स ब्रांड न्यू. आई हैव यूज्ड जस्ट once in my lifetime. So once I connect it and let me take you out for a spin, then I will talk about how it works. And so guys, welcome back. तो कल रात को मैं आपको एक राइड जाको आया था, जिससे मैं आपको हमारे ब्लू आर्मर का जो हेडसेट है नहीं दिखता है क्या हेडसेट है, ब्लू आर्मर का जो हेडसेट है वो लगा को मेरे XR हेलमेट में एक राइड जाको आया. जाको को उसमें जो डिफरेंसेस है कंपैरेटिव टू दिस गाय विच आई एम यूजिंग हियर, इट्स BT8 दिखता है क्या, इट्स BT8 हेडफोन्स जो मैं आपको वेगा हेलमेट में यूज़ करता हूँ. मेरे वेगा बनी बोल्ट बनी आई थिंक सो, या वेगा बोल्ट बनी हेलमेट में मैं जो यूज़ करता हूँ. तो ये जो दो हेलमेट में जो डिफरेंसेस है मैं बोल दूँगा. द साउंड क्वालिटी इज़ लिटिल बेटर इन दिस ब्लू आर्मर हेडफोन्स HS1 कंपेरेटिव टू दिस BT8. ये दो हेडफोन्स में भी क्या डिफरेंस है तो हमारे जो वेगा हेलमेट में है BT8, उसका ऑडियो क्वालिटी भी और आपको ब्लू आर्मर का ऑडियो क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है. कम बट ब्लू आर्मर का प्रति रिच टोन है, ऑडियो में रिच ऑडियो है. ब्लू आर्मर का रिच ऑडियो है कंपेरेटिव टू द BT8. बट तुम लगा BT8 लेते ही माइक्रो USB है, इट्स ओके फॉर मी, देन गो फॉर इट. इट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर यू कंपेरेटिव टू ब्लू आर्मर HS1. मैं कहीं को लिया तो बिकॉज इट हैज़ अ Type-C पोर्ट, so that I don't have to carry a lightning port for my iPhone, Type-C port for the GoPro, and a micro USB for my headphone to charge. Okay, that's the reason I bought an Blue Armor HS1 headphones for my helmet. So इसमें मैं अब इनिशियल में क्या फाइंड आउट कराया था, I could not find the app which supports the HS1 ऐप सपोर्ट है जो बोलते हैं. आई कुड नॉट फाइंड इट. बैटरी लाइफ आई नीड टू चेक बिकॉज 20 आवर्स जो बोलते हैं वो आपको 20 आवर्स में आपको यूज़ करे के बाद तुम लांग बोल सकता, ऐसा उठा को नहीं बोल सकता. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज. एंड कंक्लूशन ऑफ द वीडियो, इफ़ यू वांट a headphones cheap best, go for BT8. It has 4 to 5 hours of battery life. तो उसके साथ मैं आपको ब्लू आर्मर का HS1 लिया सो, जिससे कि मुझे आपको HS1 से 20 hours of battery life बोलते हैं. बट देखेंगे 20 hours मिलता है कि नहीं, लाइक समझ में आता नहीं. एक 2 से 3-4 रोज़ आराम से, नो प्रॉब्लम, इट हैज़ द चार्ज, नो प्रॉब्लम, इट हैज़ द चार्ज, ऐसा बिल्कुल है. सेकेंडली BT8 को ऑन करते हो, यू डोंट गेट द चार्जिंग इंडिकेशन लाइक कितना % बैटरी है क्या भी तुमको नहीं मालूम होता. लेकिन ब्लू आर्मर में व्हेन यू टर्न ऑन it says like battery percentage is this much, then it goes to like Bluetooth pairing mode and it's connected, ऐसा कुछ बोलता. That's the best thing about Blue Armor. It gives you a voice indication of how much battery is left in your headset. So this is the end of the video guys. Do like, share, subscribe to my channel. इंशाल्लाह फ्यूचर में जो राइड्स आएंगे मैं बाको जैकेट खरीदने वाला हूँ, बूट, राइडिंग शूज़, ये सब खरीद को ऐसे छोटे छोटे वीडियोस डालता हूँ. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल. Until then, peace out. Blue Armor is best for
long rides. BT8 is best for short rides, for around like 2 to 3 hours rides. Моя тікає Кассандра, і грібає подра. Затмівала разум, убивала музиканта. Тим не мені я рядом були, вірила лікорія. Моя тікає Кассандра, і грібає подра.